Assalamu alaikum. This is Alina Iqbal and today I am discussing about the research paper of Zlatan Tucakovic. Yes, I am talking about that specific research paper which he made on technical diagnosis of basic logic gates. First, I will tell you a little about myself. Well, I am a student of Iqra University and I am doing BScs and I am currently in third semester. Let's move on our topic. Abstract. In this paper, we are focusing on the fault diagnosis on elementary logic gates and we are also shedding some light on the reasons behind the gate failure. In the practical part of our paper, we are focusing on implementation of the solution which focusing on building prototype. In addition to this, we are also including the final design of the device. आज हम इस पूरी प्रेजेंटेशन में फॉल्ट डायग्नोसिस देखेंगे एलिमेंट्री लॉजिक गेट्स का और इसके अलावा हम गेट्स के फेल होने की वजूहात भी जानेंगे और हमने इस प्रेजेंटेशन में डिवाइस का फाइनल लुक भी दिखाया है और इसके अलावा हम सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे. Introduction. In the first portion, we are laying down the theoretical basis of logic gates. In the second portion, we will be showing the reasons behind the malfunctions of the gate and how to examine the malfunctions. Thirdly, we'll describe the structure of prototype. In the fourth portion, we are ultimately moving toward the diagnosis of malfunctions. हमने इस पूरी प्रेजेंटेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है. इसके पहले हिस्से में हम लॉजिक गेट्स की थ्योरी के बारे में जानेंगे. इसके दूसरे हिस्से में हम गेट्स की खराबियों के बारे में जानेंगे और उन खराबियों को एग्जामिन कैसे करेंगे वो भी देखेंगे. इसके तीसरे हिस्से में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोटाइप देखेंगे. चौथे हिस्से में हमने मालफंक्शंस को डायग्नोस करेंगे. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड. Theoretical basis of logic gates. Logic gates are circuit or device which use a Boolean functions. These include and, NAND, or, NOR, NOT, and they are showing logic negation, conjunctions, and disjunctions. It can be tested by the truth table. Here is a truth table. And NOT is used as an inverter. It takes only one input and is used as a multiplier or is used as an adder. NAND is used as inverse of AND gate. NOR is used as inverse of OR gate. Moving towards our next slide. Causes of malfunctions. This describes a physical defect of one or more of its component which ultimately led to the damaging of the entire system. It is also a case that sometimes a logic gate is permanently damaged and it is caused by the error in element production or by the aging of the component. Temporary malfunctions caused by the internal noise or external influence. If occasional malfunctions become permanent, then they are called constant malfunctions. Multiple malfunctions are also possible, but they are rare and cause other type and the classes of malfunctions. इस स्लाइड में ये बताया गया है कि अगर गेट की कोई एक पिन भी डैमेज हो जाती है तो वो यूजलेस हो जाती है. इसलिए हमने इसको ओवरकम करने के लिए आईसीज का इस्तेमाल किया गया है. बेसिकली आईसीज में 14 पिन्स होती हैं. अगर आईसी की एक पिन भी डैमेज हो जाती है तो उसकी जगह हम दूसरी पिन का इस्तेमाल किया जा सकता है. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड. डायग्नोसिस. Inspection of the functionality of the logic gates varies from one gate to another. For example, if the integrated chip 7400 is inspected, then each of the 4 NAND gates will be inspected and the result will be compared with the result of ideal correct NAND gate. There are many methods of checking logic gates functionality. We are using two here. Checking logic gate functionality using sequential logic using a microcontroller. For example, अगर हम 7400 NAND गेट की आईसी को सपोज करते हैं, एक आईसी में 4 गेट्स होते हैं और अगर एक गेट भी डैमेज हो जाता है तो हम उसके बजाय दूसरे गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका रिजल्ट एकदम करेक्ट और आइडियल होगा. बहुत सारे मेथड्स हैं लॉजिक गेट्स को चेक करने के लिए, लेकिन हम यहाँ 2 मेथड को कंसीडर करेंगे. फर्स्ट वन इज सीक्वेंशियल लॉजिक एंड द सेकंड वन इज माइक्रोकंट्रोलर. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड. बेसिक प्रॉपर्टीज. Size of prototype. There are many ways to check logic gates, but we will consider microcontroller and the sequential logic. Connection between circuit component. In sequential logic, we will use more logic gates as compared to microcontroller to make our system or circuit more difficult. हम sequential logic gate में ज्यादा logic gates का इस्तेमाल करते हैं. इससे हमारा सिस्टम जो है और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ माइक्रोकंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड. सिस्टम स्ट्रक्चर. A system consists of microcontroller, keyboard,
display screen buttons. In the structure, the central element is microcontroller. The logic gates communicate the microcontroller, then press the input and give the output whether it is right or wrong. इस सिस्टम में हमने माइक्रो कंट्रोलर, कीबोर्ड, डिस्प्ले स्क्रीन बटन का इस्तेमाल किया गया है। माइक्रो कंट्रोलर को स्ट्रक्चर के बीच में रखा गया है। लॉजिक गेट माइक्रो कंट्रोलर से कम्युनिकेट करेंगे एंड व्हेन वी प्रेस द बटन इट गिव्स द आउटपुट इन आवर स्क्रीन। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। Elements that have use in our structures. These are the elements which we are using in our device. Power supply, microcontroller, display screen, keyboard, integrated circuit which we discussed in our previous slide. Testing algorithm. These are the methods which our device work as. Moving towards our next slide. Source code. The system is work on the C language which is built in the microcontroller to test the logic gates. हमने इस डिवाइस में C लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है अपने लॉजिक गेट्स को चेक करने के लिए। Moving towards our next slide. Final structure. The final structure of the system is this. You can see this. Here is a keyboard, display screen, power supply, integrated circuit. Moving towards our next slide. Conclusion. In this paper, we are provided the theoretical basis of logic gate, causes of malfunctions, and diagnosis of malfunctions. This prototype is simpler and safer for usage. Final product can be commercialized and be very useful too during laboratory assignments. इस पूरे रिसर्च पेपर का ये नतीजा निकला है कि हमने इस पेपर में थियोरेटिकल बेसिस ऑफ लॉजिक गेट्स, कॉजेस ऑफ मालफंक्शन, डायग्नोसिस ऑफ मालफंक्शंस को डिस्कस किया है और ये प्रोटोटाइप बहुत यूजफुल और सिंपल है इस्तेमाल करने के लिए भी और लेबोरेटरी असाइनमेंट के लिए भी। Moving towards our next slide. References. Author Zlatan used following resources for the research work. I hope you like my presentation. If you have any query, then please ask me. Thank you.